जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो अभी ये आइडिया में 500 प्लस लोगों का कारवां बन गया है और हम इसको एक 2025 तक 2500 NGOs मेंबर्स की तरफ देख रहे हैं कि हम इतने हमें मेंबर्स जुड़ें ताकि हम भारत के कोने कोने, शहर, गांव, कस्बे हर जगह पहुँचें और जो उनकी ज़रूरतें हैं सर्विसेज की वो उनको दिला सकें। Now I would start inviting our moderator and the guests to the dais so that we can start the session. I would first invite Suresh Kumar Gupta sir, our National Advisory Board member and moderator of the session. Shri Gupta joined Telecom Services in 1983 batch, and he worked in Department of Telecom for more than 34 years and retired as Deputy Director General in 2019. We welcome you, sir. Next, I would invite Gopal Aggarwal ji, Director Sikshit Yuva Seva Samiti and Vice President NAB, UP State Branch. Gopal Aggarwal ji is joining us virtually. I would invite Sameer Nair ji. He heads Skilling and Linking Less Educated PwDs in Sustainable Livelihoods at Youth for Jobs Foundation. Welcome, Sameer ji. I would invite Shriya Tiwari ji. She is Secretary Parivartan Society, Ranchi, Jharkhand. I would next invite Manoj Jangde ji, Founder and Chief Executive, Jan Vikas Parishad Evam Anusandhan Sansthan, Chhattisgarh. Laishram Tokendra Riki ji. He is Founder Secretary of Recreation, a voluntary agency, Spastic Society of Manipur. He is joining us virtually. I'd also invite Mr. Karmio Nornoha. He is Executive Director of Bethany Society, Meghalaya. And Dr. Pratap Rath. He is an eminent psychologist and rights activist at Odisha. So as you must be seeing, हमारे पैनल में झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश इन सभी जगहों से NGOs representatives जुड़े हैं. So now I'd request Suresh Gupta sir to please take the session ahead. Thank you, Nishtha, and thanks to all of you. जैसा कि आप सब लोगों को निष्ठा ने बताया है कि ये पैनल आइडिया के ऊपर है. आइडिया मीन्स इंडिया डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट अलायंस. इसमें हम लोगों ने जगह जगह जो NGOs अपने फील्ड में काम कर रहे हैं रूरल और रिमोट एरियाज़ में, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की है. इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले 14 साल से सार्थक जो NGOs जो PwDs के साथ काम कर रहा है उनकी स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसमें करीब 45,000 से ज़्यादा, more than 45,000 PwDs have been trained and more than 30,000 PwDs have been given employment through this initiative. But as you know, the number of PwDs are in millions, और उन सब तक पहुंचने के लिए अकेले सार्थक का प्रयास काफ़ी नहीं है. इसके लिए हमें क्योंकि हमारे जो 24 सेंटर हैं वो ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में हैं, और जैसे पिछली पैनल में सिद्धार्थ जी ने बताया कि 70% ऑफ आवर PwDs आर इन रूरल एरियाज़. तो रूरल एरियाज़ और रिमोट एरियाज़ में पहुंचने के लिए हम किसी भी एक NGO के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम सबको एम्पावर कर सकें. तो हमने ये सोचा कि बाकी जो NGOs हर जगह PwDs के लिए काम कर रहे हैं, हम क्यों ना उन सबको साथ लेके चलें और एक दूसरे का सहारा और एक दूसरे के साथी बने. इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं या जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग अपनी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ NGOs ऐसे हैं जो ऑलरेडी उस काम में लगे हुए हैं, तो हमें उनसे सीखने का और हमें उनको अपनी चीज़ें सिखाने का मौका मिलता है. तो ये पिछले 2-2.5 साल के
एफर्ट से, जिसमें कोरोना की वजह से ऑनलाइन एफर्ट बहुत यूज़फुल रहा, बिकॉज वी कुड कनेक्ट टू मैनी ऑफ द एनजीओज सिटिंग इन दिल्ली ऑनलाइन, एंड दे कुड ऑल्सो पार्टिसिपेट ऑनलाइन फ्रॉम वेयर एवर दे वर वर्किंग। तो इसलिए ये 500 से ज़्यादा एनजीओज अभी हमारे साथ जुड़े हैं। आज हमारे साथ जो हमारे पार्टनर्स हैं, एनजीओ पार्टनर्स, उनमें से कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस एनजीओज के हेड्स हमारे साथ आज हैं। 2 हमारे साथ ऑफलाइन हैं और 5-6 हमारे साथ ऑनलाइन हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो आइडिया का मंच है, इससे आप लोगों को और हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये हमें किस तरह से PwDs को एम्पावर करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसमें मदद कर सकेंगे। और कुछ अगर अपने आपके पास लाइव एग्जांपल्स हैं, आपके एक्सपीरियंस है, तो वो आप शेयर करें हमारे साथ। those who are comfortable in Hindi may speak in Hindi, those who are comfortable in English may speak in English. मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझ आए, क्योंकि हमारे ऑडियंस में ज़्यादा लोग हिंदी समझने वाले हैं। सो विदाउट wasting much time, I will invite, first of all, I'll introduce my speakers as I invite them to speak. My first guest is Mr. Sameer Nair. He is available with us on the dais. And Mr. Sameer Nair heads one of the flagship programs of Youth for Jobs Foundation, which focuses on skilling and linking less educated youth with disabilities in sustainable livelihood across India. Currently, with presence across India, they have trained and placed 32,000 plus youth, mostly from remote villages in India. They have partnered with more than 1,400 plus corporates across India to place youth with disabilities in various roles. With vision of providing job to youth nearer to their homes, he along with the team are constantly doing local market scan to create job opportunities for the youth. तो समीर जी के प्रोफाइल से ही हमें पता चलता है कि ये उसी काम में जुड़े हुए हैं जो हमारा एम आइडिया प्लेटफॉर्म में अचीव करने का है। तो समीर जी, आप हमें बताएं कि ये जो इंडिया डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट अलायंस, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म सबको देने की हमने कोशिश कर रहे हैं आप सब लोगों के कोलैबोरेशन से, उसमें आपके क्या विचार हैं कि ये कैसे, हाउ कैन यू टेक इट फॉरवर्ड विथ सम एग्जांपल्स फ्रॉम योर लाइफ? या यू कैन कंटिन्यू। Good morning to all. Before I start, I want to congratulate Dr. Jitender ji, the entire Sarthak team and NI team for organizing this two-day national conference on disability, and happy to see it happening offline, which enables to interact with a lot of people in and around. And thank you to the Sarthak and NI team for inviting me to be part of this elite panel. So coming back to the question of being part of IDEA and how it is helping all. So the idea comes from a collaboration of a lot of NGOs and other partners. And when collaboration happens, it provides solutions at scale, both volume and value, to the stakeholders who are persons with disabilities on the ground. So when the collaborations happen, typically the advantage is for the both the players, all the stakeholders involved, be it the NGO partner or be it the youth on the ground. What happens here is the collaboration enables the people with disabilities on the ground to take the advantage of this collaboration. One. Second is, it also creates the system change maker, wherein the mindset of the people on the ground gets reflected back or changed. Typically, it works in 3 areas. It could be the community, it could be the colleges, and it could be the companies where the mindset change can happen.
So when you are asking about example, I think the first example which is live, which is happening here is the conference which is happening here. I feel it is a showcase of collaboration of strength, wherein the governments, NGOs and companies have participated. And if you ask me specifically what is the example in collaborations, now I feel there were companies who have come from Amazon, DMart, etc. In fact, they are also getting benefited with this collaboration because whatever opportunities they have is getting fulfilled with person with disabilities. And second is, a lot of youth who have been part of this sitting here and on virtually, they are also getting benefited with collaboration because companies are coming together to hire people with disabilities. So I think it is a win-win situation for both person with disabilities as well as companies. Companies for hiring person with disabilities, person with disability looking for opportunities in companies so that their livelihood is sustained. So with this, I hand it over to Gupta ji. Thank you. Thank you, Samir ji, for sharing your thoughts. Since we are running late, I think we don't have much time. I will request each speaker to use 3 to 4 minutes so that we can finish our session before the next session starts. Leshram, Ricky ji, can we know whether you are available with us, and can we just say something so that we know you? Namaskar, good morning, dear panelists and everyone present online. So yeah, so I'll just introduce you to the audience, sir. Leshram Ricky ji is an audiologist by profession with a 2-year postgraduate program in human rights. He is also a master trainer for caregivers of children with disability and master trainer for the National Program for Prevention and Control of Deafness, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and Rehabilitation Council of India, New Delhi. He is the founder secretary of Recreation, a voluntary agency, Spastic Society of Manipur, which is a not-for-profit organization working towards empowerment of persons with disability. And he is very active. He has participated in many online sessions, and he has also galvanized NGOs in the Northeast through his contacts. So Leshramji, please share your experiences. Yeah, I'll put the video on off so to enhance my audibility, and challenges are so many nowadays. My electricity went off since 10. So good morning, everyone, and their panelists who's on, and also everyone who's present online and offline. At the very outset, I would like to congratulate Dr. Aggarwal and the Sarthak team for organizing this 2 days 9 National Conference on Disability on the very important theme Global Partnership for Disability Inclusive India. I would also like to express my heartfelt gratitude for giving me the opportunity to be a part of the August panel on Collaborate to Catalyse Inclusion of Persons with Disabilities. We have many of the disability legislations and schemes being not fully implemented in the regions. I just want to highlight a bit about the Northeast specifically, because the challenges we face are different from what is faced in the mainland. For inclusion and empowerment of persons with disabilities to happen, we need strong partnership through capacity building and strengthening of organization at the local levels, and working out shared goals and mutual respect by providing support and acknowledging expertise and skills. Just sharing our experiences, we have been closely associated with NAI when it was with Amarjyoti, and I happened to meet Dr. Jitendra way back in 2016 when during the handover function of NAI to Sarthak. And then I was the vice president of NAI Northeast. Now we have nodal agencies. And as sort of a day for Umatuli ma'am and Dr. Jitendra. And all of us present were also very emotional. And
Dr. Jitendra, we had a firm belief, being a person with disability and who is well educated and having experienced both a non-disabled life and a disabled life, we were sure that he will carry forward NAIA, and beyond our expectations, he'll live up more than what we had expected. So now, even idea, we have more than 20 NGOs from the Northeast on board, and we expect a lot of from these alliances. What I visualize about the partnership is that Sarthak, being a developmental organization in the disability sector, and the upcoming webinar web series with models in place on the website, it will really improve the sustainability, strength, and scalability of NGOs, TPOs, as the objective will surely leave a huge impact in the inclusion and empowerment of persons with disabilities. Also, I'm very glad that to know that Sarthak has his presence even in the UK. I also have gone through the CAP 30 and Rozgar 30, which is very innovative and one of its kind. So I feel there's still a lot of digital gap among our person with disabilities. So Sarthak with their training program should reach the unreached PwDs in the Northeast, especially those who are in rural and far-flung hilly areas. And since we have positive of time, I'll just share some of my requests and suggestions on partnerships. That we need to identify partners with similar contexts at the local level, study the weakness and strength of our partners through through a short analysis, and accountability to the partnership should be in place. Once this is done, I think the handholding support, fundraising, training, etc., can continue. We should also have a mechanism for maintaining an evaluation in place. So thank you very much. Thank you, Laishramji, for sharing your thoughts. I think you have been a very active member of this platform from the Northeast, and we know that you are very active in mobilizing people from all walks of life from the PWD community. हम लोग NAAI में अभी तक सिर्फ रीजनल और नेशनल कंपटीशन करते थे, तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जो रूरल और रिमोट एरियाज़ में हमारे PWDs है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो इस मंच के माध्यम से हमने इस बार ये कोशिश की है कि हर स्टेट में एक नोडल NGO अपॉइंट किया जाए और उसके थ्रू उसके जो स्टेट के NGOs हैं उनको जोड़ के और हर स्टेट के साथ एक अलग सेशन करके हम लोगों ने कोशिश की है कि जो स्किल है PWDs की NAAI के लिए, नेशनल एबी ओलंपिक्स के लिए, उनको अभी से आइडेंटिफाई करें नेक्स्ट एबी ओलंपिक के लिए। तो अगले 3 साल में हमने उनका अभी रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। उनको हम लोग अभी उनके स्किल के हिसाब से रेट करके वी विल स्टार्ट ट्रेनिंग देम और इस तरह से ग्रूम करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास हर स्किल में कम से कम 2-3 बच्चे नेशनल लेवल पे तैयार हों जो आगे जाके उसे पार्टिसिपेट कर सके। सो दिस प्लेटफॉर्म इज़ नॉट ओनली बीइंग यूज्ड टू रीच PWDs फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो फॉर preparing them for the NAI competition which will be held after 3 or 4 years. May I now request Mr. Manoj Jangde, who is also online with us. He is the founder and chief executive of Jan Vikas Parishad एवं अनुसंधान संस्थान Chhattisgarh, and he has been working for the last 22 years to uplift the living standards of the disabled. So Manoj जांगड़े जी, आप अपने विचार शेयर करें, आपके एक्सपीरियंसेस इस मंच से जुड़ने के और इससे क्या लाभ हुआ आपको। साथियों, जब से मुझे सार्थक के साथ का मौका मिला, हमारे संस्था ही छत्तीसगढ़ को इसका फायदा मिल रहा है। अभी जो सार्थक सारथी ऐप निकाला है, जो सारथी ऐप में बहुत सारी शासकीय योजनाओं और अलग अलग स्टेटों की जो जानकारियां हैं
वो सभी एक साथ एक ही जगह पर उपलब्ध हुआ है, जिससे छत्तीसगढ़ के सभी साथियों को, सभी दिव्यांग साथियों को एक बहुत अच्छा उसका फायदा मिल रहा है, उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मैं कहूँगा तो ये एक सागर में गागर वाली बात है, और इससे सभी दिव्यांग साथी, चाहे वो में हो, चाहे वो पेन हो, चाहे अन्य योजनाओं की जानकारी अलग अलग विभागों में आवेदन है या अपने आवेदन अप्लाई करना है, वो सभी जगह मिल पा रही है। इससे हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के सभी साथी अभी धीरे धीरे उसका फायदा लेने के लिए आगे आ रहे हैं। और इसके साथ ही हम लोगों को जो नेशनल ओलंपिक प्रतियोगिता से जोड़ने का जो मौका सार्थक द्वारा मिला है, वो मैं समझता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ में एक दोबारा इस तरह से पहल शुरू हो पाया है। तो ये काफी अच्छा हमारा अनुभव रहा है। और इसके साथ ही आ, हम लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल पाया है जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी एनजीओज धीरे धीरे जुड़ पा रहे हैं और उनको जानकारियां मिल रही है। छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत है अभी दिव्यांग साथियों के लिए, डिसेबल्ड लोगों के लिए, चाहे वो पेंशन के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो। अभी किसी प्रकार के रोजगार के साधन नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लोगों को रोजगार और अवसर मुहैया करा सके। तो ये मैं इतनी कहना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी। आपने कैब सारथी ऐप के बारे में बात की, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो हमारी कैब सारथी ऐप है उसमें PwDs के लिए एज वाइज, डिसेबिलिटी वाइज और स्टेट वाइज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और हम इसको पॉपुलराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारा जो आइडिया का प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू भी हम जब NGO से इंटरेक्ट करते हैं तो उनको इसके बारे में बताते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे वो और लोगों को इसके बारे में बताएं, ताकि जो रूरल और रिमोट एरियाज़ में भी लोग हैं वो वहाँ बैठे भी सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। एक स्कॉलरशिप क्या क्या मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास कहाँ बनते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ बनता है, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स कहाँ हैं, सारी इन्फॉर्मेशन स्टेट वाइज उसमें है अवेलेबल। और मैं ये आपके साथ शेयर करने में मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे सभी जो पार्टनर हैं आइडिया के, वो इसको अपने पूरे कोशिश करके आगे पूरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। अब मैं मिसेज श्रेया तिवारी जो हमारे साथ मंच पे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने विचार शेयर करें। श्रेया जी, शी इज़ ए 30-year-old prim and proper homemaker as well as an ambitious working woman from Ranchi, Jharkhand, the land of forests and also the mineral wonder of the world. She is the secretary of Parivartan Society since 2020. Parivartan Society is an NGO which is actively working on all social issues like environment, rural development, PwD sector, etc. So over to you, Shreya ji. Thank you so much for giving me the opportunity. बहुत अच्छा लग रहा है इतने कम समय पे मुझे जुड़ने का मौका मिला. थैंक यू जितेंद्र सर एंड रजत सर, एवरीवन फॉर ट्रस्टिंग अस एंड एक पाथ प्रोवाइड करना ताकि हम PwDs के लिए और वर्किंग कर सके. I belong from Jharkhand. It's a very rural area, but still वहाँ opportunities and talents इतने हैं कि अगर हम उन्हें encourage करें, motivate करें, तो एक बहुत अच्छी platform and they can make their life as better जितने सारे और लोग कर सकते हैं. If we speak for PwDs,
वहाँ पे टैलेंट्स इतने ज़्यादा हैं बट दे डोंट नो कि उनके टैलेंट्स वो अपना कहाँ फिट करें और कैसे वो अपने लाइफ को और बेटर कर सकते हैं. सो विथ बीइंग विथ सार्थक एंड NAI हमने उनसे एक रूट एक पाथ उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की है. हमारी कोशिश पिछले 2 सालों से है. हमने उनके लिए मिस्टर एंड मिस इंडिया स्पेशली एबल्ड प्रोग्राम एक अरेंज किया था विथ हेल्प ऑफ सार्थक. हमने उनके साथ इस प्लेटफॉर्म में उनको ग्लैमर ये के लिए इंट्रोड्यूस किया था. दे वर वेरी एक्साइटेड और वो चाहते हैं कि हम इसको नेशनली इंटरनेशनली शो करें जैसे नॉर्मल लोगों के लिए होते हैं. तो दिस वाज अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर देम कि हम भी ग्लैमर फील्ड पे एक टैग ले मिस्टर एंड मिस इंडिया काइंड ऑफ. सेकेंडली हमने एक प्रोग्राम किया था स्किल पे, जो एग्जीबिशंस लगते हैं, फेयर लगते हैं उस काइंड का, ताकि आप अगर आप में कोई भी स्किल है, आप में कोई भी प्रतिभाएं है, आप प्लीज़ आए डिस्प्ले करें. बिकॉज द थिंग इज़ कि हमारे यहाँ नॉर्मल कहीं भी अगर हम एग्जीबिशन लगाते हैं तो वी हैव टू बी कैपेबल कि हम एक स्टॉल बाई करें, वहाँ अपने डिस्प्लेज लगाए, स्टॉक्स अरेंज करें. तो PwDs वर नॉट सो एबल कि वो उतने स्टॉक्स अरेंज करें, उनको सेल करें. तो वी जस्ट प्रोवाइडेड एवरीथिंग कि आप प्लीज़ आए, डिस्प्ले पे अपने टैलेंट्स एंड स्किल्स शो करें. एंड इट वाज अ वेरी गुड आउटकम एंड वी वर वर्किंग कि हम इसे पैन इंडिया वर्किंग करें विद द हेल्प ऑफ सार्थक एंड NAI. थैंक यू सर फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी कि हम इसे अच्छी तरह से पैन इंडिया वर्किंग करें. वी हैव गेटिंग द इश्यूज़ ओवर देयर कि हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ कनेक्टेड है जो कि स्पेशली MR ग्रुप पे वर्किंग करते हैं. दे हैव द टैलेंट्स बट दे डोंट नो कि उसे पैन इंडिया वो कैसे प्रमोट करें और हाउ टू कनेक्ट विद द मेन स्ट्रीम. राइट, द मेन स्ट्रीम वॉज द एम्प्लॉयमेंट कि वो चाहते हैं कि वो स्वरोजगार हो. द मेन कंसर्न फ्रॉम द पेरेंट्स वी आर गेटिंग दैट कि आफ्टर हमारे रहते वी विल टेक केयरिंग ऑफ थिंग, बट अगर हम नहीं रहते हैं तो इनकी क्या होगी. दैट वाज द मेन इशू व्हाट्स वी आर गेटिंग. तो हमने एक कोशिश की थी अपने ओर से दैट्स उनके हाथ से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वी स्पेशली विजिट टू द एम्प्लॉयड सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर्स लाइक क्राफ्ट्स, दियाज, इनवलप, पेपर बैग्स, हैंड बैग्स, एवरीथिंग. तो दे वर सो हैप्पी कि अगर हम इस प्रोडक्ट्स उनके हाथ से बने हुए अगर अच्छी तरह से प्रमोट करें एंड वी जस्ट गेट बाय फ्रॉम देम, तो उनके लिए एक अच्छा स्कोप होगा कि हमारे बच्चे कुछ भी बनाते हैं और वो अगर प्रोडक्ट मार्केटिंग की ओर पे जुड़े तो इट्स बीइंग अपॉर्चुनिटी फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. तो दीज आर द थिंग्स वी आर थिंकिंग कि हम इसे पैन इंडिया कैसे वर्क करें और उन बच्चों के लिए कैसे एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज करें. थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम और अच्छे PwDs के लिए कैसे वर्क कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. Thank you, Shreyaji. I think you are doing a wonderful job in this very short span of time. मैं आपकी और सबकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि एक गवर्नमेंट का पोर्टल है जेम, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, और उसमें हमारे एक एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं अतुल भटनागर जी. उन्होंने बहुत एफर्ट करके उसमें PwDs के लिए एक अलग से एक्सेस दिलवाया है जिसमें PwDs अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं और वो प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट में कहीं पे भी ज़रूरत हो तो वो ख़रीद सकते हैं. तो आप भी हमारे थ्रू उसके प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाइए. Definitely, sir. Definitely. And we are happy to know that Sarthak is of some help to you in your endeavor. May I now introduce our next speaker, Mr. Karmo Norona from Meghalaya. Karmo ji, can we hear your voice? Just to make sure that you are there and your voice is. Hello. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Hello. So, sir, Yes. I'll just introduce you to the audience. Surely. After 50 years in the social sector, Mr. Karmo has dedicated his life motivating and mentoring people to fulfill their dreams using innovative strategies, particularly in the education and livelihood sector. He is currently the Executive Director of Bethany Society, Meghalaya. He has done B.Ed Special Education for Visual Impairment and MS Sociology in Politics. His area of expertise is promoting inclusive development programs,
designing inclusive schools, and mentoring and monitoring lifelong learning, rural technology for sustainable livelihood in the areas of farming and livestock. So, Karmoji, please share your experience and your thoughts about this idea of coming together for the benefit of people from all over the country. Over to you. Thank you. Thank you very much, and greetings to Sarthak, Dr. Aggarwal. Thank you for giving me this opportunity, and all my colleagues across India um, who are trying to listen to me. I hope it's worthwhile. First of all, what I want to say is thank you. I have just read that across the world, the 5 most important skills for the 21st century, the first one is collaboration across the world. Okay. Second one is communication. Third is, they're the C's, creativity. Fourth one is critical thinking. And right in the middle is an attitude or a skill called compassion. That is social emotional learning. I think you have hit the nail on the head. If we can focus on these 5 C's, we can transform the landscape of social. I'm now saying, besides persons with disability, I look at social economic disadvantaged group. That's very, very important. What I want to say is that we have to be creative. And thank you very much for giving us an opportunity. I'll give you an example. For example, we have to move from job seekers to job givers. It's huge. Just like the way we say in inclusive education, move away from labels to learners. Everybody is a learner, including ourselves. So this is a reflection on my own work and not a reflection on people around the world. So for example, recently, we have done a skill development course in the GATE, and our resource persons are persons with disability. They are the skill providers. So what I'm saying is, if we are mainstreaming, we have to proudly mainstream persons with disability with quality inputs. So, and I think collaboration and Sarthak can do that for us. For example, they are also now giving people in jail training in organic farming. So when they come out, so they no longer look at beneficiaries and seekers of inputs, but they are actually givers of outputs to people. That's very, very important. So what we are going to do for the next 5 years is going to use a government program to transform the skilling across our rural landscapes, and that is using the National Rural Livelihood Mission, which works through self-help. And we're saying that we can do skilling, because then what happens is you don't require funding. All the funding is available, and we are working towards rural. So if there is any program of the government, the self-help group will do it, whether it's, so they become partners in development. And that, to me, is very, very important. And the last thing I'd like to say is see, they look at marketing, this, etc. And if we say that we are part of a larger national thing, so I think so we can really, really transform by using existing mainstream flagship programs. That's all I want to say. The time is short, but thank you so much for inviting me. Thank you, Mr. Karmo. I think you are working in a very difficult area where your services of a person like you are most desired and most valuable. And thank you for sharing your thoughts with all of us. May I now request Dr. Pratap K. Rath to say a few words, and I'll first introduce him to all of you.
Dr. Rath, he is an eminent psychologist and a rights activist of Orissa. His major focus area of work has been realization of the rights of the vulnerable children and children with disabilities. He has been working in this field since 1987. One of the founder members of Open Learning Systems. In fact, the name has been coined by him. He has been instrumental in the JJ Act coming into force along with a few others from across India. A rationalist to the core, he does not mince any words and is very forthright in expression and practices what he preaches. So over to you, Dr. Pratap. Thank you, Sarthak, and thank you, Dr. Jitender. Thanks, everybody. I'll go straight to the point. Yes, we all have been working for getting things for the person with disability. But let's accept this, that the great caste system in India also percolates into the disability sector, very unfortunately. There are people who are on the higher up, they can be skilled, they can be given a job, and we all working for them can take pride in the fact that we have been able to put so many persons in the mainstream society. My friend from Manipur did use the word very interestingly, the mainland India. Well, I'm yet to see this mainland India for persons with disability, where they are not discriminated. If that means mainland, where you are not discriminated, I'm yet to see a place in India where they are not discriminated. They are always discriminated. We have lots of laws. We have lots of laws that, well, we had this Persons with Disability Act in 1995, and suddenly we realized that the rights had to come to the forefront. So we had a Rights for Persons with Disability Act. But where are the rights? Where are the rights? We are still fighting. And per person with disabilities such as variously labeled as mentally retarded, autistic, person with cerebral palsy, the picture is very, very bleak. 35 years of experience in this area and nothing but fight, fight, fight all the way. We have barely managed to inculcate into the minds of these persons that they are the citizens of India. And we as citizens of India need to remember our preamble of the Constitution, which talks about assuring the dignity of the individual. Well, how much of dignity we can assure when they are discriminated against, they don't have the opportunity, they don't have any scope to go ahead, then yes, when things look very, very bleak, at least sharing in the platform that Sarthak provides some kind of a light at the end of the tunnel. So we have rights of the child for education. Yes, we have that. And all persons with disability will be educated. How? Where are the trained personnels? What kind of training do they have in handling a person with disability in the classroom? These are the basic rights. But where is the implementation? Where is the, everybody needs a danda. You have to have some punishment for violation. Buildings, beautiful new buildings are being made without accessibility. Without, even now, even though we have an act which says it's an offense. They can misbehave, they can deny somebody promotion because the person is with a disability. They can have their own sweet ways of dealing with persons which has some kind of disability, and they can get away with it. Somewhere we have to get together and talk about rights. Yes, things can be done. We can skill them. We can get them to push few persons and take a name for ourselves that we have done so much for so many people. But finally, unless it is rights which comes to them as they were born in India, we will be far away. We will just be working. And as very clearly stated by Sarthak representative,
yes, it's not one NGO, one person's job. It's our job. But let's understand we have a fight in our hands and we have to speak bluntly about what is lacking in our implementation. ये बस की बात नहीं है, ये सोच की बात है. ये जो सोच को चेंज करने के लिए लड़ाई करना है. होने से cannot change. We have to establish them. We have to get the parents on board. We have to see that there are persons who will take time over long periods of time to be skilled. How do I skill a person with a disability such as autism, such as mental retardation, and which requires lifelong care? I run a child care institution where I'm supposed to be taking care of the child till, believe it or not, till 18 years of age. And then what? Then what? Where do they go? No, we don't have any policy for them because it's all linked to the so-called mainstream ideas where the so-called normal child will walk away 18 years old, skilled and ready to take a job. We have known well that these are the persons who need lifelong support, and life doesn't stop at 18 years. It goes on. We have to think on to mean, and we have to understand what does it mean. Yes, Dr. Pratap, thank you for sharing your thoughts with us. I think there are many issues which need to be resolved. There are a lot of issues with Okay, shortly, just to say what open learning system has been doing, yes. We have believed in quality right from. We have got some children like this who do gate duty, security job, take care of the children who are even worse condition than them. They are now being trained to be serving in a restaurant. They are trained for producing bakery stuff, but yet we are still struggling because this looks good on paper, but if you are sharing on a larger platform like this, we share our anguish. It's a long way to go. Thank you. Yes, thank you, Dr. Pratap. I think you have raised very important issues, and that's the whole idea of having this platform, that we can collectively try to find solutions and implement them in the field in Thank all you. corners of the country. May I now go to our last speaker, Gopal Krishan ji. He has been waiting patiently since quite some time. He has done his BTech Mechanical, and at present he is the Director of Shikshit Yuva Seva Samiti and Vice President NAB UP State Branch. He has been working in the field of disability since last 28 years, especially in the area of CBR and inclusive education. So Gopal Krishan ji, आप अपने विचार साझा करें हमारे साथ. जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुप्ता जी. और सबसे पहले मैं सार्थक और आदरणीय जितेंद्र अग्रवाल सर का और इस पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन के आयोजन के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं. और साथ ही मुझे ये अवसर मिला आज आपके समक्ष अपनी बात रखने का. व्यक्तिगत रूप से ना आ पाने का खेद है. उसके बावजूद निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 2-2.5 वर्षों से जब से सार्थक के आइडिया प्लेटफॉर्म के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है, बस्ती जैसे पिछड़े जनपद में हमने बहुत सारे दिव्यांग युवाओं को, दृष्टिबाधित युवाओं को ऑनलाइन और साथ ही साथ सार्थक के ही सहयोग से हमारे यहाँ एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट भी किया गया है, जो अभी कुछ भिन्न भिन्न कारणों से उस व्यवस्थित रूप नहीं ले सका. उसके बावजूद उसने बहुत सारे ऐसे दिव्यांग युवाओं की उम्मीदों को जगाया है जो आने वाले समय में जरूर पूरी होंगी. और उसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी जरूरत है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आइडिया प्लेटफॉर्म ने
जो सबसे बड़ा काम किया, और खास करके कोरोना काल में जब ऑनलाइन एक्टिविटीज का दौर चल रहा था, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सपेंड किया और ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन तक बहुत सारी जानकारियां देने में, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने में। और इतना ही नहीं, कोरोना के दौरान कोरोना के दौरान तमाम ऐसे दिव्यांग परिवारों को राशन किट की मदद देने में भी सार्थक ने पहल की थी, जिसकी वजह से हमने भी अपने जनपद के 50 ऐसे परिवारों को राशन किट जैसी मदद देने में सहायता प्राप्त की सार्थक के मदद से। तो ये कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आइडिया प्लेटफॉर्म अपने आप में एक बहुत ही सशक्त माध्यम बन सकता है और आने वाले समय में, जिसमें हम सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशंस को क्लब करके एक हब बना सकते हैं उनको सेवाएं देने का, और ग्रास रूट लेवल पर खास करके ग्रामीण स्तर तक सेवाएं पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम। क्योंकि सार्थक राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी अच्छी पहल रखता है, चाहे वो नीति आयोग में हो, चाहे वो मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ा विषय हो, तो निश्चित तौर पर उसकी ये ताकत निचले सतह तक बैठे संस्थाओं को ताकतवर बनाने में और ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांगजनों तक सेवाएं पहुंचाने में एक सशक्त माध्यम बन सकती है, सशक्त ताकतवर एक अम्ब्रेला बन सकती है। इन्हीं बातों के साथ और पुनः इस अधिवेशन के लिए अपनी शुभकामनाओं के साथ और सभी सम्मानित जनों का आदर करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आगामी सालों में भी हम अपने इस माध्यम के वजह से और सारी चीजें पहुंचाने में जरूर सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। क्योंकि टाइम की कमी है और हमारा नेक्स्ट पैनल अभी शुरू होने वाला है, इसलिए मुझे खेद है कि मैं आप लोगों के पास दोबारा आपके विचारों के लिए नहीं आ सकता हूं। लेकिन जैसा सब लोगों ने बताया कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे दिव्यांग हैं जिन तक हमें पहुंचना है, और इसके लिए आइडिया जैसे प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। और हम ये चाहते हैं कि आज जो 500 एनजीओ हमारे साथ जुड़े हैं, वो अगले साल, इस साल के अगले 2023 के आखिर तक 1000 हो जाए और 2025 तक कम से कम 2500 एनजीओ हों। तो फिर हमें लगेगा कि हम कुछ इफ़ेक्टिवली और मास स्केल पे कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि हर एक एनजीओ को अपने लेवल पे बहुत बड़ा काम करना मुश्किल होगा। बट इफ़ यू ऑल ज्वाइन टुगेदर, आई थिंक वी कैन अचीव ए लॉट, and there is a lot to be achieved. So with these words, I thank you all, and we come to the end of this session. Thank you. Thank you, Suresh sir, for this wonderful session, and our esteemed panelists who have joined us virtually as well as physically. I request Shri Ratanlal Aggarwal ji and Dinesh Jain ji to please grace the dais and share these mementos to our panelist and moderator. Thank you, Suresh sir, for this wonderful session.
Thank you, Sibaji.